Hello students, welcome. Welcome to MGM Education. Let us discuss the summary or the main content of the essay, The Empty Page, written by Stephen Harvey. Okay, he is a professor of English and creative writing at Young Harris College, and he is a member of non-fiction faculty in Ashland University. Right? He is also a senior editor of River Teeth magazine. So all this shows that he is a famous and well skilled writer. This lesson now we are going to discuss about the essay. First I told you about the author, now about the essay. The essay Empty Page is an idiomatic attempt to understand and unfold the complex. Unfold means open or expose the complex process of writing and creativity, and probe means search deeper into the mystery means secret of literature and inspiration. So ପିଲାମାନେ ଏଠି ସେ ଲେଖନୀ କୌଶଳ, ଲେଖନୀ ପ୍ରୋସେସ ବା ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ମାଇଣ୍ଡରେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଆଇଡ଼ିଆ କିଭଳି କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଦର୍ଶାଇଛି. ରାଇଟ୍? ଫର ଦି ଅଥର ଦି ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ରାଇଟିଂ ଇଜ୍ akin ବୋଲେ ସିମିଲାର to praying, which he describes as the state of as a state ମାନେ ଅବସ୍ଥା between meditation and petition. देखो पिलाने दीटा वर्ड इट्स यूज करछन्ती. इट्स इंपोर्टेंट फ्रेज खंडटा एठी. मेडिटेशन बोले ध्यान रे बसिबाटा, आउ पिटिशन बोले लेखिबाटा, राइटिंग. सो बोथ द थिंग्स एकिन माने सिमिलर बोली से कहछन्ती. केमती एठी भी मानसिक शांति दरकार, सॉलिटरी माने एकुटिया हबा दरकार, जेमती ध्यान रे आउ किछि इंटरफेरेंस रहबा खबनी, एकाग्रता लोडा. राइटिंग रे मध्ये आमे खाता पेन धरिकी बसिकी कोनोसी विषय लिखिया को गले कि डिस्टर्ब कले आमे आ लिखि परिबानी से कथा. तेणु करी से एटी कंपेयर करछन्ती. मेडिटेशन एंड पिटिशंस आर मोर और लेस सेम टाइप ऑफ एक्टिविटी व्हिच डिमांड्स ए डिसेंट साइलेंस, जोटी की साइलेंस रोडा, राइट, and makes one listen to the solitary voice, well inner voice, the माने अंतरात्मा रो भाषा ओ विचार को से पढ़ी पारिबाछि, ताको शब्द माध्यम रे परिप्रकाश करिबा सक्षमता आसीबो. एथि पई ताको कोन लोडा, एक कंसंट्रेशन, दुई साइलेंस एटमॉस्फियर, न हेले से एम्प्टी पेज एम्प्टी हे करिका रहि जिवो. ओके आउ कौन कहते देख. द एसे इंसिस्ट ऑन बोले प्राधान्य देइचंती थिंकिंग ऑफ राइटिंग नॉट ए प्रोडक्ट. ये थिंकिंग ऑफ राइटिंग बा थिंकिंग ऑफ राइटिंग लिखिबार एवं भाबिबार विषयटा गोटे प्रोसेस, गोटे प्रणाली, नॉट ए प्रोडक्ट, गोटे द्रव्य नुहे. राइटिंग अनफोल्ड्स माने ओपन्स बा डिस्प्लेस इन द स्टेज ऑफ प्री राइटिंग, ड्राफ्टिंग, रिविजन. ये तीन टा कथा से कहते. जेबे लिखा बसले आम तीन टा जिनस आगे राफरे लिखा, प्री राइटिंग, तापर ड्राफ्टिंग करवा, भूल भाल थी सजेकी, तापर रिविजन, आउ तो पुणी देखा कौन भूल अच्छी कि ठीक अच्छी कि. सो तीन टा प्रोसेस रे गला परे जाकर आम राइटिंग टा ठीक ठाक हम. फॉर ऑथर राइटिंग इज एन एक्ट ऑफ फेथ, ए मूवमेंट ऑफ मिराकल. दुईटा कहूँ, एक्ट ऑफ फेथ, movement of miracle, where the mind creates magic on page. सेमते कहीं कहले जे माइंड क्रिएट मैजिक बेले लिखा कौशल उन्नति है फल रीडर्स कौन कर एंजॉय कर फील कर हार्ट टचिंग केतरा लाइटिंग था आम पढ़ला बेले बहुत आनंद अनुभव करूँ. तेणु ये एठारे एक्सपोज करचंती गोटे कथा जे आर्ट ऑफ राइटिंग केमती हम, राइट.
आउ जोटा कि आमर कम्युनिकेशन रे मध्य बहुत इंपोर्टेंट बोली से कहछन तांकर ए कहउचंती द एसे इज क्रुशियल फॉर द स्टूडेंट एबे देखो एसे लिखिबा तुम बस मन करो who tends to avoid writing because they have a hard time getting started and who doesn't get any idea देखो आइडियास आसीबाटा एसे तुम जदि लिखियो तुम फर्स्ट कोन लोडा पिला मन आइडिया कोठु आसीबो so it's a process here you have to put some questions will कहउचंती put some questions well silence रे थिले ही concentration थिले ही you can create the questions on the topic what you are thinking to write about and it is then the ideas will flow from the solitary voice a solitary voice बोले पद बंध कपिला solitary voice बोले the inner voice that comes from within your heart देखो स्टूडेंट्स एबे हमें about author पढ़ले सेकंड रे about the essay पढ़ले एबे the text को जिबा राइट टेक्स्ट से कौन लिखछि देखो से प्रथम पॉइंटा मेडिटेशन एंड पिटिशन विषय का एक्सप्रेस करछि हले लाइन वाइज आमे टिक देखिबा these days the closest I come to prayer is in the words you are reading now my prayers are my essay essay spelling देखो ESSAIS बोले एटा गोटे फ्रेंच वर्ड डिस्कवर रही आमे जो एसे कहूचे सीटा का सेम एज द राइटिंग मोन्टाइन ता होची पिला माने ये गोटे फिलोसोफर एक्चुअली फ्रांस रो फिलोसोफर पॉपुलर एसे सब बहुत गुडे ये लिखछि ता विषय रिफर करी कहउचंती called it essay writing से कौन बोल डाकछंती called these verbal attempts वर्ड रे हम लिखिबा नहीं तण कर ताको verbal बोली कहले at the contemplative life okay contemplative life right बोले in my life बोली कहउछ से the empty page is my call डाकरा and filling it से खाली पेज को फिल अप करवा is my profession बोले vocation से कहउछ सेटा profession right in a state बोले अवस्था that hovers बोले moves बोले क्या बाबा बुलिवा moving around is called hovers between meditation and petition I bow before the alphabet at my fingertips and without getting on knees down देखो पिला ने प्रे कले आमे नील डाउन नहीं करी फिर माल धरते बोले हाथ रे जप माल धर की फिंगर आम बोलौथवा रिसाइटिंग करथवा इठी कोन करछि ये कंप्यूटर की टाइप ऊपर धर की फिंगर टिप्स चलै छी तुमे भी फिंगर प्रेयर करबा लोक बोलौथाउ छ एक ध्यान रे भगवान आडे मु भी मोर प्रे अर्थ मोर राइटिंग रे मध्य मु मोर फिंगर सी टाइप करके बोलौथाउ छ सो पिटिशन and meditation goes hand in hand बोली से दर्शाउछि this I do daily मु सब दिन एटा करे no matter what जोटा भी हो no matter where जो जगह भी हो sometimes I have to drag myself down the stair to my office but this is rare केबे केबे मु ऑफिस जाय कि मध्य लखे it is rare a few time in my life अल्प समय रे केबे किंते I have stopped किछि दिन पय बंद कर दै छी लिखिबाटा once in 3 months इमते मु जाए and joined the vast majority of a happy flock group लाने who spend their lives not writing ये गैप समय रे मु जो माने राइटिंग प्रति सेते एंगेज न थांती तांक सहित मध्ये समय बिताए but I find I miss it too much and always go back राइटिंग मोर अभ्यास हेले 3 मास गैप हे गेला परे से किंत फील करथला से कथा कहिछि writing daily is a privilege well opportunity right but occasionally I wonder and I sit at the desk for morning martins बोले पिला माने morning prayer why I do this what does it mean to follow a line or words each day into silence देखो
follow a line or word each day into silence. What kind of prayer do I make? बोले silent रे मु prepare करे my prayer. My prayer is what? My prayer is not prayer to God. My prayer is what? Is writing. बोल coach. Like priestly mumblings and stretching pencil serves as the hum of my prayer rug, separating me from the world. I began clustering thoughts, jolting ideas on the blank page and circling them, and I go connecting related thoughts with line. When I am done, the page look like a sky filled with balloons. बोले पेज को स्काई से तुलना करचंती अक्षर गुडी को balloons. तो मु प्रथमे पिला माने मु गोटे तीनटा स्टेप देइकरी तार राइटिंग जाय बोली कहितली सेटा को से एठी टिके विस्तारित भाबे करचंती कहिचंती से तीनटा स्टेप कोन थिला कहलो एक प्री राइटिंग तापर ड्राफ्टिंग तापर रिवीजन सेटा को से एते सब भाषा रे वर्णना करचंती एंड ईच bearing the advertisement or some moments of missing waiting to be teared to a paragraph connected or properly paragraph re mu connect kartha hai. No matter how old I get, this stage of writing remains youthful. mu kete old hele madhya mor lekhibata sabale young ka thae boli kochi. All promise, all maybe the happy face of a kid in the park next to the polishing the sentences. देखो से आइला polishing the sentences at the end of writing of the essay बोले एटा रिवीजन करिवो polishing बोले भूल भाल दिले कटाकटी करिवो राइट. दिस कार्टूनिंग एटा से कार्टूनिंग कहउचंती टोटल एक्टिविटीज ऑफ राइटिंग को. दिस कार्टूनिंग इज माय फेवरेट पार्ट ऑफ कंपोजिशन. लिखिबा समय रे मु जो कंपोज करे एटा मोर फेवरेट एक्शन बोली कहउचंती. The hastily drawn balloons boulevards lend a feeling of loftiness, happiness and freedom and playfulness. एथिरे मते बहुत आनंद मिले. I try to retain in my prayer even when I began the more adorable stage of typing sentences on computer. Computer रे मध्य बसिकी जेतेबेले मु ए कंपोज करके लिखुथाए I get a great feeling of self satisfaction बोल से कहउचंती. एटा थिला पिला माने दुईटा पैराग्राफ दुईटा एक्स्ट्रा सरला एबे हमें जिबा थर्ड पैराग्राफ. सो थर्ड पैराग्राफ पिला माने लेट अस सी दिस. For many years my students wrote this first assignment in class. While I walked to the back of the room, I leaned man टिके लोही की देखला against a window sill झरका and watched. I remember vividly means clearly the day that I realized what was happening. The room was and still is standard issue for colleges. Okay. White cinder block walls, bright and beautiful. माने से सराउंडिंग से स्कूल को से बहुत दिन परे जाइथिला परे से सेटाकार सराउंडिंग विषय कहिचंती राइट. तापर कहते सोल ड्रेनिंग ओवरहेड लाइटनिंग डेस्क इन द रोज एटा स्कूल ज्योग्राफी विषय से डिस्क्राइब करछन पिला माने. तापर लाइन टाइम पैटर्न. द स्टूडेंट्स हैड रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम हाई स्कूल्स एंड अराउंड जॉर्जिया एंड द साउथ ईस्ट and I dare say I have the daring to say none of them thought they could write a lick. Write a lick बोले the students could not write a anything significant बोली से कहते. ग्रेजुएट सर जाइए किंतु से राइटिंग करने जो कह जाऊँगी दे आर नॉट क्वालिफाइंग बोली से कहते. Yet there were all busily at it. Busy thila bala. The silence of the room filled with their scratching. It is scratching बोले पिला माने sound made by someone. Okay बोले पेपर को स्क्रैच कला बेले से माने घबरेला बेले साउंड होछ सते जेपर से मान लिखुचंत किंतु पाको जाके देखला बेले सब खाली खाली पेपर्स.
Once I sat in the place, attempted to find the blue book in the college, racking my brain, racking means putting hard pressure on my brain for any morsel बोले a small piece किए लिटिके लिखछि पुरा बोलिबाटा of information, stringing out sentence, okay, filled with errors and awakeness. देखिला जे जमान sentences अल्प किछि लिखिछन्ति खाली error ଆଉ awakeness means unmatured भलिया लिखिछन्ति. Looking at the lowered head of my students, seeing the empty page momentary through their eyes, I spoke up. ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେମାନେ ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ପୋତିକିରି ବସିଛନ୍ତି କିଛି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ. ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଡଭାଇସ୍ ଦେଲି. କ'ଣ ସେ ଆଡଭାଇସ୍ ଶୁଣ ପିଲାମାନେ? The voice you hear in your head, okay, the solitary voice that gives you the next word. Some looked up. କେତେ ଜଣ ଉପରକୁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? Other continue to write. ଅନ୍ୟମାନେ ଲେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି. ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ର ସିନ୍ ପିଲାମାନେ. ସେଠର ପିଲାମାନଙ୍କର ଲେଖିବାର କାଲିବରିଟି ଆଣ୍ଡ ୱିକନେସ୍ ବିଷୟରେ ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି. ରାଇଟ୍? ଆଉ ଯିଏ ବି ଲେଖିପାରୁଛି ତାର ବି କିଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ସେତେ ଗୋଟେ ହାଇନେସ୍ ନାହିଁ, ରିଟର୍ନରେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ନାହିଁ. ଓକେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ୟାରାଗ୍ରାଫ, ଫୋର୍ଥ ପ୍ୟାରାଗ୍ରାଫ. Of course that is a lie. There is no solitary voice. Our voice comes to us in a language that we inherit. Inherit माने पूर्व पुरुष मानक ठारू आमे जोटा पाइथिबा ताको inherit बोली कहबे. Received from the parents. It is made up of all voice we have heard and read over lifetime. देखो lifetime रे जो voice आमे सुनिथिबा शिखिथिबा ताको solitary voice कहउछि. बोले voice within the heart रहइबो. My voice rings loudly in the student's head. आमे head कोइ परिबा, heart कोइ परिबा पिलामन. As their own when they write the assignment. And it usually say no. A few absentites have, I suspect. I suspected a few absentites. और अर्थ होची फाउल लैंग्वेज पिलाने बोले रफ लैंग्वेज ठीक नहीं मान करो लेखिबा लोक मान floated in their consciousness ताको निज बुद्धि रे समान लिखि दिचन. Since this exercise began but not one will make it a way onto the page. पेज को कई भी ठीक से जाई पारलेनी, ठीक से पूर्ण करि पारलेनी. I stand over their shoulders whether I am actually there or not, limiting their selection of words, so the result is composite of voice that have shaped who they are and the expectations of the college essay. That this looming presence speaking de profundis, एक पिलाने टिके डिफिकल्ट वर्ड अछि. This looming presence, looming बोले something that appears in impressively large, okay, de profundis माने heartfelt cry बोले inner feelings थाई कि लिखुचंती ना नाही. एटा गोटे सिंबलाइजेशन से यूज करचंती. इट गोटे एग्जांपल भी से दैचंती. स्टीफन ग्रीन ब्लेटर who has written, there may be a moment in which a solitary individual put the words on the page, but it is no mean clear that this moment is the heart of the mystery. No doubt किए ये गोटे पिला माने अमेरिकन स्कॉलर टा किए जे स्टीफन्स आउ ये लिटरेरी क्रिटिसिजम उपरे अभिज्ञता बेसी अछि 20th सेंचुरी रो. तेणु से कहूँ बहुत लोक लेखती किंतु ताइरे सारांश किछि न थाए बोला बेला से इथे एक्सप्रेस करचंती. तापर से ताको ऐड करचन. लेटर ही एडेड दैट द मूवमेंट ऑफ इंस्क्रिप्शन is itself a social movement. The inscription बोले words that are written. And I am Socratic enough to believe that writing happens
always and only in dialogue. Socrates तमे जानते हो पिला माने ग्रीक रो बड़ फिलोसोफर सीए गोटे ग्रेट टीचर आमे जानछे राइट सीए कहूची हमर राइटिंग टा डिपेंड करिवो केमती writing happens always only in dialogues रे हबो monologues એટલે own thinking निज थॉट रो बाहर कर लिखवाटा whether the quotation marks are there or not it is the way we learn who we are in a world of thoughts पिलाने सॉक्रेटिस रो गोटे गुण थिला से यथेष्ट क्वेश्चन जाको देखले मध्ये पचारे काहेकि जेते क्वेश्चंस पुट करिवो सेते आइडियास आ इंटेलिजेंस बढ़ियो बोल कि तार विश्वास आउ के ताको प्रश्न कले मध्ये से प्रश्नर उत्तर मध्ये से प्रश्न रेखा दबो दैट इज द इंटरेस्टिंग कैरेक्टर सॉक्रेटिस रो राइट से बड़ ग्रेट फिलोसोफर ऑफ ग्रीक तुम जानथिबो ओके ए पैराग्राफ सरला पिला माने जिबा नेक्स्ट पैराग्राफ प्रीवियस पैराग्राफ रे हमें पिला माने पढिथिले द मूवमेंट ऑफ इंस्क्रिप्शन बोले राइटिंग इंस्क्रिप्शंस बोले एंड द मूवमेंट ऑफ कंपोजिशन केमते करा जिवो लेखा को फाइनल प्रिपरेशन रे से विषय रे एबे से विषय रे आके ऑथर रेफर कर कहउचंती जेम्स बिटन रो गुड कथा वंस ही रोड एट अ पॉइंट ऑफ ऑटरेंस बोले उच्चारित करबा बा कहबा व्हेन वी स्पीक वी राइट जतो हम कहबा किबा लिखिबा वी इनएविटेबली शेप आवर थॉट एज वी अटर देम हम जिमिति कहबा से हिसाब रे हमर थॉट बोले विचार को सजेबा एंड वी पुश द बोट आउट बोट को हम ठेल दबा तापर से तार टारगेट रे पहुंच पारे बा न पारे एमति से कहउचंती वी पुश द बोट आउट एंड ट्रस्ट विश्वास करिया पड़िबो इट विल कम टू द शोर बोले कोल रे लागिबो समवेयर और एनीवेयर और नोवेयर बट वी हैव टू ट्राई वी हैव टू कीप फेथ इन अस बलकरी से कहउचंती which would tantamount to losing our way. He described a politician. थोड़े से गुटे politician विषय कहते से speech रे एमती कहते the politician who was a great as an example he spoke like this एमती कहते से it seems to be chairman in spite of the difficulties Professor X has raised कौन साउंड हो देख लो पिला माने एटा को पाराबोलिक बोली कहबे माने पारा लैंग्वेज मझे मध्य आम कथा होतला बेले केते लोक देखथुवा हां हूं करके लंबौथबे ठीक तापर ताकर मेन पद कहथबे ए ब्रिटेन बोलीबाटा जेम्स ब्रिटेन ऑथर टीचर ये भी टॉकिंग रे ये जो मझे गैप रे साउंड प्रोड्यूस करचंती ऑटरेंस एतिक भितरे से कोन करिवे ताको थॉट को सेव कर देबे राइट गोटे ऑटरेंस ताकर को ठीक से सेव कर दे कहे मिनिस्टर मन मध्य देखथुव तुम पिला माने मझे मझे कहि दोथुवे आई थिंक इंत बोले बोले ए जो 2 सेकंड नेबे सेति भितर नेक्स्ट सेंटेंस कोन कहबे ताके भाबी देबे थॉट क्रिएट करिया पई एटा गोटे प्रोसेस एटा को पैरा लैंग्वेज बोलबे बा पैराबोलिक बोलबे एटा यूज करंती आ आमे क्रिकेट कमेंट्री मध्य देखिथिबा हेमान कहथुवे ओ स्कोर्ड वेरी नाइस यू नो ये जो यू नो बोल मझे कहथुवे एंड वी हैव प्लेड आवर लेवल बेस्ट यू नो ए कौन यू नो मझे पशि एटा भी गोटे प्रकार पारा लैंग्वेज मझे यूज करा जाए किसी समय नबा पाई से समय रे नेक्स्ट सेंटेंस को सेव करिया पाई दे टेक दिस सो इठी कौन कहू देखो ब्रिटेन पॉइंट आउट दैट वी कैन सी इन दैट सेंटेंस प्रिस्क्राइबली एट व्हाट पॉइंट्स वी फोरसा माने पूर्वरु आगो माने आगो को देखि परिबा फ्यूचर दिस टोटल स्ट्रक्चर बोले सेंटेंस स्ट्रक्चर किमते हो से भाभी दबो इवन इन दैट टेडियस माने टायर्ड हे जबाटा सेंटेंस बोले लंबा सेंटेंस गेले टेडियस सेंटेंस बोले पिला वी कैन सी ए माइंड शेपिंग एट ए पॉइंट ऑफ ऑटरेंस देखलो ना मु कहबाटा आसिला सेति समय रे से माने शेप कर देबे तांकर थॉट टाको आउ ताको गोटे गुड सेंटेंस रे मध्ये कन्वर्ट कर दे पारे इटा का मिराकल while we speak when we write बोली को आउची अच्छा तापरे नेक्स्ट पैराग्राफ जिबा तो ए मिराकल कोन पिला माने द माइंड क्रिएट्स द मैजिक ऑन द पेज बोली से कहचंती एंड मिक्सेस द इंग्रेडिएंट्स बोले थॉट रो आइडियाज गुडा सब यूनिक स्टाइल रे ए सब माइंड रो गेम से सुनिबो इनर वॉइस ताको से सॉलिटरी वॉइस कहचंती ता माध्यम रे we shape and compose in silence
ओके लास्ट पिला माने the result may not be a formal prayer, it is prayer बोले से राइटिंग टा प्रेयर टा का मान को पाई प्रीस्ट मान को पाई किंतु आंको पाई इट प्रेयर बोले राइटिंग फॉर्मल राइटिंग बोले बुझो ऑफिशियल इट इज क्लोज टू द स्टिल स्मॉल वॉइस ऑफ द क्वेकर्स बोले पिला माने क्रिश्चियन कम्युनिटी रो केते जण मेंबर्स ऑफ द चर्च who are the members of a Christian community or group of people of a religious society, friends, those who believe in the doctrine of inner light. ସେମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ Quakers ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି. I suppose but my faith and it is in the end an act of faith and the institution that shapes my utterance gives the shape to a sentence and I do able to write something and fill up my empty page. So this is all about the empty page. तो देखिले पिला माने प्रथम मु अबाउट ऑथर कहली तापरे अबाउट द एसे कहली तापरे द टेक्स्ट विषय रे कहली राइट. सो टेक्स्ट रो मेन पॉइंट्स गुडा कहली सबुटु मेन की पॉइंट होच पिला माने मेडिटेशन एंड पिटिशन विषय रे. ओके तापरे तमरो राइटिंग स्किल बा राइटिंग गुटे केमती क्रिएटिव ये तापर पिला माने सॉलिटरी वॉइस ऊपर इंपोर्टेंस दिया गला. तापरे सॉक्रेटिस रो कथा आइला तापरे तांको टीचर जेम्स बिटन से केमती पैरा लैंग्वेज यूज करथिले से पॉइंट आइला. तापरे राइटिंग टा फाइनलाइज हला परे एटा गोटे केमती माइंड रो मिराकलस बोल से कहचंती. लास्ट रे क्वेकर्स विषय रे कहचंती एवं फेथ इन गॉड ता गोटे इनर वॉइस क्रिएट करके हमको डिक्टेशन भितर डाकला बेला लागबो एवं आमे से एम्प्टी पेज को फिल अप कर परिबा ये जिनसो से कहचंती. ओके स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच for watching.